वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर एजुकेशन एंड कोचिंग क्लासेस। मैं हूं मनीषा पवार। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड एसएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का बोर्ड पेपर सॉल्यूशन मार्च 2024। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन नंबर एज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें सिर्फ हमें ऑप्शन लिखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से राइट ऑप्शन सिर्फ लिखना है, ना कि उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, regeneration occurs in dash. Options are amoeba, paramecium, euglena and planaria. Right option is option D. Second, lactobacillus brevis gives us the beverage dash. Options are cocoa, coffee, wine, cider, and right option is option B, coffee. Third, a minor change occurs due to change in position of any nucleotide is termed as dash. Options are transcription, translocation, mutation and translation. Right option है option C. Fourth, atomic power plant in Maharashtra is at dash. Options are Chandrapur, Koina, Tarapur, Anjanvel. Right option है option C. Fifth, example of phylum Arthropoda is dash. Scorpion. Options are scorpion, starfish, earthworm, hydra. And right option is option A. ऑप्शन के साथ यहाँ पे आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1A के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए आता है, मतलब टोटल ऑब्जेक्टिव्स के हमें 10 मार्क्स मिल सकते हैं। फर्स्ट है pick the odd man out. Duckbill platypus, pomfret, lungfish, peripatus and odd one out है pomfret. बाकी के 3 कनेक्टिंग लिंक है। सेकेंड, राइट कोरिलेशन स्किन, मेलानिन एंड पैंक्रियाज, इंसुलिन और ट्राइप्सिन। इंसुलिन और ट्राइप्सिन। थर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म with the help of water is called blue revolution. This is true statement. Fourth, write full form of WHO. W for world, H for health, O for organization. World Health Organization is full form of WHO. Fifth, match the pair. कॉलम A मेल, कॉलम बी में हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 44 प्लस XY। आंसर्स दिए हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, गिव रीजंस एनी 2। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रॉपरली आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो उसमें, वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन, दो tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in class amphibia. Point number 1, though the tortoise lives on land as well as in water like the amphibians, its other characteristics are very much like those of reptiles. Point number 2, it breathes only with lungs, whereas amphibians breathe with gills and lungs. Point 3, its body is covered with scales, whereas amphibians do not have exoskeleton. Point number 4, hence the tortoise cannot be included in the class Amphibia and is included in the class Reptilia. Second, hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energies.
First point, the energy sources used in such options, that is water, sunlight and wind, are never ending. These sources are never ending. Second, even though if we use them, they are not going to end and will be available again and again naturally. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए जो सोर्सेस है वो है वाटर, सनलाइट एंड विंड. ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं. वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन because they are available naturally, and hence hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called as renewable energies. Question number 3. We feel tired after exercise. Answer. Point 1. When we exercise, the muscle cells use up more oxygen, which cause temporary shortage of oxygen. Point number 2. In this situation, the muscle cells perform anaerobic respiration. एनोरबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे दो रेस्पिरेशन होते हैं. एनोरबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. बट जब मसल सेल्स परफॉर्म करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, देन muscle cells perform anaerobic respiration. Point 3. In anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized and the pyruvic acid produced undergoes fermentation to produce lactic acid. Fourth, due to incomplete oxidation of glucose, less energy is produced. The lactic acid produced leads to muscles fatigue. Hence, we feel exhausted after exercising. Next. B. Answer any 3 of the following. ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन ह्यूमन बॉडी. रेडिएशन के बैड इफेक्ट क्या होते हैं? आंसर इज, सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस आर एज फॉलोज. फर्स्ट, cancerous ulceration occurs due to higher radiations of X-rays. Cancerous ulceration. Second, tissues in the body are destroyed. Third, genetic changes occur. Fourth, vision is adversely affected. देखिए सेकेंड पॉइंट में टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ में विजन कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड. सेकेंड, रीड्रॉ एंड कंप्लीट द गिवन चार्ट. अगर ऐसा चार्ट आपको दिया जाता है तो जैसा है वैसा ही चार्ट आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके जो हमें फिलअप दिए हैं वो फिल आपको करना है. वो फिलअप है political condition, factors affecting the social health. First is political condition, second education and job opportunities, third financial status, fourth social environment. इन चारों के अलावा और भी कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इनके अलावा आप इसमें से भी कुछ कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं. Beside this, satisfying basic needs, social and physical conditions, gardens, transport facilities, social safety, social treatment, playgrounds, residential area, water, toilets are also the answers. Next. Third, write any 4 important facts which must be thought over while considering the scope of disaster. 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं. यहाँ पे मैंने 6 फैक्ट्स दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं. इन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड. फर्स्ट, प्री डिजास्टर फेज. सेकेंड, वार्निंग फेज. थर्ड, इमरजेंसी फेज. फोर्थ, रिहैबिलिटेशन फेज. फिफ्थ, रिकवरी फेज. एंड सिक्स्थ, reconstruction phase. Next, question number 4.
Name two fuels obtained by microbial process. Why is it necessary to increase the use of such a fuels? Answer is methane, ethanol, hydrogen gas are the fuels obtained by microbial process. आपको यहाँ पे टू फ्यूल्स लिखने के लिए कहा है. यहाँ पे मैंने तीन लिखे हैं, आप दो या तीन लिख सकते हैं. We should increase the use of such fuels because point number one, these fuels are smokeless and pollution free. Second, these are easily available and produced at low cost. Next, fifth, what is DNA fingerprinting? यहाँ पे आप एज करना. What is DNA fingerprinting? Where is it mainly useful? Answer, DNA fingerprinting means due to property of uniqueness of DNA, sequence of each person, identity of any person can be established with the help of its available DNA. This is known as DNA fingerprinting. Uses of DNA fingerprinting are as follows. First, identity of a criminal can be established with the help of any part of the person's body found at the site of crime. Point number two, identity of parent of any child can be established. Next, question number 3. Answer any 5. 15 marks के लिए क्वेश्चन आता है. 3 marks for each answer. फर्स्ट क्वेश्चन. अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं. सब क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन, व्हाट आर vitamins? Vitamins are a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various processes in the body. Second sub question is classify them according to their solubility. According to solubility, they are divided into fat soluble and water soluble. Third sub question is give one example of each type as per above classification. Above classification means solubility as per solubility. Fat soluble vitamins are A, D, E, K, and water soluble vitamins are B and C. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट, स्टेम सेल्स. Stem cells are special types of cells which are present in the body of multicellular organisms and which give rise to all other types of cells. Sub-question 2, cloning. Production of replica of any cell or organ or entire organism is called cloning. Sub-question 3, genetically modified crops. Answer is crops developed with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called genetically modified crops. Next, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पैराग्राफ दिया है. पैराग्राफ में हमें आंसर फिल करना है. जिसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसमें से आपको चूज करके यहाँ पे फिल करना है. देखते हैं ऑप्शंस. स्पिलिंग ऑफ डैश ऑयल अकर्स इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजन. तो इसका ऑप्शन है सी, ऑक्सीजन, पिरिडीन्स, मैकेनिकल, CO2. तो विच ऑयल? पेट्रोलियम ऑयल. यहाँ पे आप फील करोगे पेट्रोलियम. occurs in ocean due to various reasons. This oil may prove
fatal, fatal, and toxic to aquatic organism. It is not easy to remove the oil layer from surface of water by dash method. तो मैकेनिकल, यहाँ पे आंसर होगा मैकेनिकल, मैकेनिकल मेथड. However, bacteria like Pseudomonas spp and Alcanovorus workumensis have ability to destroy the have the ability to destroy the pyridines. यहाँ पे देखिए ऑप्शन है pyridines. Pyridines and other chemical. Hence, these bacteria are used to clear the oil spills. These are called as hydrocarbonoclastic bacteria, that is HCB. HCB decompose the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with oxygen and CO2. ऑप्शन में है ऑक्सीजन एंड CO2. ऑक्सीजन एंड, देखिए O2 लिखा है, लेकिन ऑप्शन में अगर हमें ऑक्सीजन दिया है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही लिखना पड़ेगा. O2 लिखेंगे तो रॉन्ग मिलेगा. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड CO2 and water is performed in this process. आंसर्स दिए हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 4. Observe the given picture and answer the question. Sub questions. Sub question 1. Identify the given diagram. The given diagram is schematic of windmill. Given diagram is a schematic of windmill. Sub question B. What is the source of energy in this project? The kinetic energy of wind is the source of energy in this project. Windmill के लिए source है kinetic energy of wind. Third sub question. Why this source is supposed to be eco-friendly? First point, wind energy is eco-friendly as it does not require any fuel. Second, thus ultimately pollution is not created in energy generation. Next, question number 5. Complete the following chart. यहाँ पे हमें 6 फिलअप दिए हुए हैं, each for half mark होगा. Hobbies helpful to overcome stress. First, reading, drawing and dancing. स्ट्रेस से बाहर आने के लिए हम रीडिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और डांसिंग भी हॉबी ले सकते हैं. कुकिंग, फोटोग्राफी एंड सिंगिंग. इसके अलावा और भी है, किसी किसी को मटेरियल कलेक्शन का भी हॉबी हो सकता है, या स्ट्रेस से बाहर आने के लिए मटेरियल कलेक्शन, स्कल्पचरिंग आर दी अदर आंसर्स. नेक्स्ट, 6th, write names of any 6 material which are to be in the first aid box. The necessary material in first aid box. First, bandage strip of different size. Second, wound gauge. Third, triangular and circular bandage. Fourth, medicated cotton. Fifth, hand gloves. Sixth, clean and dry clothes pieces. 7, soap. 8, antiseptic. 9, safety pins. 10, blade. 11, small pins. 12, needle. 13, band-aid. 14, torch. 15, scissor. 16, thermometer. 17, petroleum jelly. देखिए हमें कितने मटेरियल्स कहा है? ओनली 6 मटेरियल. आउट ऑफ दिस यू हैव टू राइट ओनली 6 मटेरियल्स. Next, 7. Define
वेस्टिगल ऑर्गन। इसमें भी हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन है डिफाइन वेस्टिगल ऑर्गन्स। Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called vestigial organs. Sub-question B. Write name of any two vestigial organ in the human body. First, appendix. Second, muscles of ear pinna. Third, tailbone. Fourth, body hair. Sub-question C. Write name of those animals in which these vestigial organs are functional. Answer is appendix. Appendix is functional in ruminants. Ruminants का मतलब होता है वो animals जो grass खाते हैं. Muscles of ear pinna functional in monkeys. Tailbone functional in arboreal, that is tree living animals and monkeys. Body hair functional in some animals to protect the body and maintain body temperature. 8th question. Read the statement and answer accordingly. Calcareous spines are present on the body. Tube feet are used for locomotion and capturing prey also. Identify the phylum and give one example. यहाँ पे हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, फाइलम आइडेंटिफाई करना है और उस फाइलम से आने वाले एक एग्जाम्पल लिखना है. फाइलम एकाइनोडार्माटा एंड एग्जाम्पल्स है स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एटसेट्रा. इन चारों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. Sub question B. I live in your small intestine. Pseudocoelum is present in my thread-like body. Identify the phylum and give one example. Answer. Phylum is Aschelminthus and examples are Ascaris, filarial worm and Loaloa, etc. Sub question C. My body is spindle shaped. I respire with the help of gills. Identify my class and give one example. Class Pisces. Examples are pomfret, seahorse, shark, electric ray, stingray, etc. Next question, question number 4. Answer any one. 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको लिखना है. इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट, इन विच ऑर्गन स्पर्म्स आर फॉर्म्ड? Answer is in testes sperms are formed. B. What is the length of a sperm? Answer is length of sperm is about 60 micrometers. C. What is the work of vas deferens? Vas deferens. Answer is vas deferens helps in forward movement of sperms. D. By which type of cell division sperms are formed? Answer is sperms are formed by meiotic division. E. Name any 2 unpaired organs of male reproductive system. Answer is urinogenital duct, penis, scrotum and prostate gland. Next, question number 2. Answer the following questions based on environmental conservation and biodiversity. चार्ट कंप्लीट करना है. इसमें भी हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आंसर देखते हैं. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज.
चार्ट है, स्पीसीज आर vulnerable species, second endangered species, third rare species, and fourth indeterminate species, जिनको अभी तक डिटरमाइन भी किया नहीं गया है. Next, sub question B. How can biodiversity be conserved? Give any 4 points. Answer is biodiversity can be conserved by first, protecting the rare species. Second, establishing national parks and sanctuaries. Third, declaring some regions as bioreserves. Fourth, implementing projects for conservation of special species. Fifth, conserving all plants and animal species. And sixth, observing regulations, for example, the Wildlife Protection Act 1972. And seventh point is preserving traditional knowledge. आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने के लिए बोला है, तो आप सिर्फ 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं. सब क्वेश्चन सी, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. Color of the pages in red list of endangered species. Red list, first box is given pink color, second green color. यहाँ पे हमने मार्च 2024 का पेपर कंप्लीट किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.